Let's look at this RC that talks about Christian entertainment having a moment. So there are many signs that Christian entertainment is having a moment. This means that Christian entertainment is enjoying the spotlight. It is doing pretty well. The biggest one is the beards which are everywhere. So the biggest sign that Christian entertainment is having a moment is that beards, दाढ़ी हर जगह है. थोड़ा humorous बात की है. Switch on House of David, a new series on Amazon Prime Video, and you'll be offered biblically big beards alongside biblically big battles. And a retelling of the story of David and Goliath. Turn into the chosen, and you will get more big beards. This time starring alongside big bad Romans and retelling the life of Jesus. So this paragraph tells you that how there is a there is a strong focus on Christian entertainment, which means the movies and shows they're all having Christianity as a theme. और उसका एग्जाम उसका जो साइन बताया कि बेड दाढ़ी आपको दिख रही है बिकॉज as you know Jesus and all the other disciples everybody they in that era had beards. तो हर जगह आपको बेड दिख रही है. हाउस ऑफ डेविड एक शो है जहाँ पे बिब्लिकली बिग बेड बिब्लिकली मीन जो बाइबल में और बिब्लिकली बड़ी बड़ी बैटल्स हो रही है वहाँ पे. डेविड गुलायत की स्टोरी हमें पता है. और चोजन करके एक है वहाँ पे और बड़ी बड़ी बेड आपको मिलेंगी. Big bad Romans के alongside fight कर रहे हैं retelling of the life of Jesus. Jesus' viewing figures, much like Jesus himself, have risen. The Chosen have been watched about 280 million people worldwide. Mary, about the mother of Jesus, became the third most viewed film globally on Netflix after release in December. Today, House of David is the 8th most popular series on streaming services in America. तो ये बताया गया यहाँ पे कि जीसस के या जो क्रिश्चियनिटी बेस्ड मूवीज हैं या शोज हैं उनकी व्यूअरशिप कितनी राइज हो रही है. So they've used various examples to tell you that. Broader social climate in America is suitable for Christian fare too. तो क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं सो लेट्स से बुक्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर आल्सो गेटिंग प्रमोटेड. जेडी वैंस अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली इन्वोक्ड थॉमस एक्विनास एन इटालियन थियोलॉजियन व्हेन टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन पॉलिसी. तो जेडी वैंस एज वी ऑल नो द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. तो जब वो एक बार अभी रिलीजियस कुछ इमिग्रेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे तब उन्होंने थॉमस एक्विनास के को इन्वोक किया था या उसके बारे में बात की थी जो कि इटालियन थियोलॉजियन है. Or Donald Trump has promoted God Bless the USA Bible, and popular writers such as Jordan Peterson are flogging best-selling books about faith. तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक गॉड ब्लेस द यूएसए करके बाइबल बाइबल को प्रमोट किया है और काफी राइटर्स हैं जैसे जॉर्डन पीटरसन तो फेथ के ऊपर काफी बेस्ट सेलिंग बुक्स निकाल रहे हैं. So this talks about that not just the viewers but also broadly there is a culture, there is a social climate that is conducive to the rise of Christianity and religion-based things. However, some filmmakers argue that it is less that Hollywood has seen the light, that the world right now feels very dark. For the past few years, people have felt afraid, says Kelly Morgan, head of Wonder Project, independent studio that made House of David. तो ये कह रहा है ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड को सडनली कोई लाइट दिख गई है कि वो ऐसी मूवीज बनाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट सडनली दे फाउंड लाइट. इट्स दैट द वर्ल्ड फील्स राइट नाउ वेरी डार्क. दैट मीन्स कि दुनिया अभी काफी काफी यू कैन से इट द वर्ल्ड बेसिकली थिंक्स दैट इट इज अ डार्क फेज. दैट मीन्स इट इज नॉट अ वेरी people are not very hopeful or optimistic about things, and therefore maybe they are turning to faith. Over the past few years, people have felt afraid, means they've been very stressed. Today, people want to watch things that restore faith, which he argues is much bigger and broader than just God. People want to have faith in something, which is more than having faith in just God. The studio describes the mission as not making Christian TV, but as restoring faith in things worth believing in. तो ये जो स्टूडियो ये कहता है हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि हम ये नहीं हमारा मिशन है कि हम सिर्फ क्रिश्चियन टीवी दैट मींस जीसस और रिलीजन बेस्ड चीजें बनाएं बल्कि वी वांट टू रिस्टोर पीपल्स फेथ इन थिंग्स व्हिच आर वर्थ बिलीविंग इन. Maybe that could be nature, maybe that could be something else, but the studio feels that it's time that we restore people's faith in things that are worth believing. So here this paragraph tells you that it is not that suddenly the Hollywood producers have decided or they have seen the light, but it is that people are not very hopeful, optimistic, and therefore it's these kind of studios want to make movies that restore people's faith. Now, such as say profit margin, so worth believing in, such as say profit margin. So this is like a tongue-in-cheek or a teasing way in which the author had said that the studios जो हैं उनको restore faith करना है किसी चीज में तो profit margin भी अच्छी चीज है restore करने के लिए. In a saturated streaming market, these films and shows are offering the most Christian of values, hope to their makers. तो इससे काफी होप आ गई है. जो सैचुरेटेड स्ट्रीमिंग मार्केट है बहुत कंपटीशन है तो इस तरह की जो शोज हैं दे गिव होप टू द मेकर्स. फेथ बेस्ड शोज हैव proved profitable. The first is that they are relatively cheaper and simple to make. Story of Jesus does not rely on very special effects, nor do they need big name celebrities. They can also tap into a large audience from 2.4 billion people globally identify as Christian.
So here they've talked about what are the reasons why these studios are making these kind of movies and shows. Because one is that they are cheaper to make because they don't need special effects, they don't need big celebrities or big stars, and there's a captive audience. Almost 2.4 people believe in or they are followers of Christianity. Not all of these films and shows offer biblical stories. Some merely serve what is called Christian values. In other words, they're low on sex and violence and high on feel-good factor. Not quite the case that these films contain nothing bad. But in such series and films, violence is muted in their depiction with good eventually triumphing and villains being vanquished. तो अब ऐसा नहीं है कि सारी मूवीज के अंदर कोई बिब्लिकल स्टोरी ही हो या कोई जैसे कि हमारे यहाँ रामायण हो या कोई ऐसी स्टोरी ही हो, right? उसमें बेसिकली क्रिश्चियन वैल्यूज सर्व अप करने वाली बात होती है. दैट मीन्स की मूवी वुड बी लो ऑन सेक्स एंड वायलेंस. दैट मीन्स पीपल कैन फील गुड अबाउट दैट. और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ भी खराब नहीं होता. इन सीरीज और वायलेंस में, इन सीरीज और फिल्म वायलेंस भी होता है, लेकिन वो थोड़ा म्यूटेड होता है और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं. जैसे रामायण में हमने देखा द गुड ऑलवेज टाइम्स ओवर इविल. तो राम और रावण की जो कहानी है उसमें भी इट्स नॉट दैट देयर वाज नो वायलेंस, राइट? देयर वर वॉर्स, देयर वर फाइट्स. Even in Mahabharata and our other stories, we've got violence, but the violence is there to show that the good triumphs over evil and the villains are vanquished. So here he's trying to say that कि जरूरी नहीं है कि जो story सारी वो biblical ही हो. वो they basically try to serve up Christian values. It is easy to see why streamers might choose for their shows to divert from straight text. Adapting biblical stories can be tricky. अब ये भी नहीं है कि सारी की सारी जो एज वी डिस्कस्ड की सारी बिब्लिकल स्टोरीज ये स्ट्रेट टेक्स्ट से डाइवर्ट करते हैं. Different Christian films and shows therefore take different approaches to their source material. Some simply use it as jumping off point. Other write script that sound more like scripture. From medieval mystery plays to films including Quo Vadis, a religious epic from 1951, and Mel Gibson's Passion of the Christ, Christians have always pillaged sacred text for entertainment and enlightenment with varying degrees of critical success. तो अब जो जो स्ट्रीमर्स होते हैं या जो ये प्रोड्यूसर्स हैं इनके, ये अलग अलग तरीके से अडाप्ट करते हैं. कुछ तो जो वो सिर्फ एज ए स्टार्टिंग पॉइंट यूज करते हैं सोर्स मटेरियल को. कुछ जो है वो ऐसा लिखते हैं एज इफ स्क्रिप्चर. और फिर उसने एग्जांपल दिए हैं कि पहले मिडिवल मिस्ट्री प्लेज हुआ करते थे, फिर फिल्म्स आई. तो पुरानी एक फिल्म थी 1951 की और उसके बाद 2004 की मूवीज है. तो यहाँ पे दे हैव पिलाज्ड मींस दे हैव प्लंडर्ड और दे हैव यूज्ड सेक्रेड टेक्स्ट फॉर एंटरटेनमेंट एनलाइटमेंट टू विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ क्रिटिकल सक्सेस. तो इसमें किसी को सक्सेस मिली, किसी को नहीं मिली. एनवाईटी ने कुआ वाइडिस को एज अ ब्लेंड ऑफ विजुअल एक्साइटमेंट, मतलब विजुअली तो एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट है उस मूवी में, बट वर्बल बोर्डम, दैट मींस द डायलॉग्स आर प्रीटी बैड, प्रीटी बोरिंग. Mel Mr. Gibson's passion was so bloody that it summed up as a 2 hour and 6 minute snuff movie. Snuff movies वो होती है जिसमें काफी वायलेंस मर्डर वगैरह होता है, because their aim is basically to earn money for the studio, the producers. So this paragraph tells you that how the scripts have been differently used. और ये अभी की बात नहीं है, ये काफी टाइम से चला आ रहा है. पुरानी मूवी थी को वाइडिस और बाद में फिर मिस्टर मेल गिब्सन की जो क्राइस्ट ऑफ पैशन. तो ये मूवी इसको वेरियंट डिग्रीज ऑफ क्रिटिकल सक्सेस मिली. तो एनवाईटी ने इसको कहा है कि दिखने में अच्छी थी लेकिन द डायलॉग्स आर नॉट गुड. Reviews of more recent fairs have been similarly unchristian. Mary was panned by a critic as a single worst film I've seen all year. तो रिसेंट जो फेयर है, दैट मीन्स रिसेंट मूवीज आई, ये तो पुरानी हो गई थोड़ी 1951 2004 की. जबकि ये जो हाउस ऑफ डेविड और चोजन और मेरी की बात कर रही है अभी नई है. तो दे हैव बीन आल्सो अनक्रिश्चियन मींस दे हैव नॉट बीन वेरी गुड. मेरी वाज पैंड मींस क्रिटिसाइज्ड by a critic a single worst film I've seen all year. House of David have been described as wooden, cheap looking, humorless and dull. Such slings and arrows, मतलब जो ये इनके ऊपर slings चला रहे हैं, arrows चलाते जाते हैं, ये वही लैंग्वेज यूज कर रहा है डेविड एंड गोलियत वाली. सीम टू मेक लिटिल डिफरेंस. तो इस तरह के उनके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं कि सिंगल वर्स्ट फिल्म और चीप लुकिंग, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. वो बट इज रिव्यू glumly concluded the film was such a drivel that it would be probably a vast success. It's like a paradoxical statement. That on one hand he's saying that film was such a drivel. Drivel means something that goes on and on without stopping to the point of boredom. But probably it will be a vast success. It became the highest grossing film for that year. Viewing figures of Chosen and House of David continue to climb whatever critics say. In entertainment, a little, as in history, a little persecution seems only to deepen Christian fervor. So this is a closing remark here. In entertainment, as in history, a little persecution. Persecution मतलब अत्याचार. Whatever torture or whatever let's say excesses that are carried out on people, generally minorities वगैरह के ऊपर जो करते हैं या किसी दूसरे फेथ के ऊपर करते हैं, so they are called persecution. जैसे हिटलर ने ज्यूज को किया था persecute
in Second World War, they killed millions and millions of Jews. That was persecution, right? So you select people and then you torture them. तो जो अत्याचार आप करते हो उनके ऊपर, राइट? तो इन एंटरटेनमेंट एज इन हिस्ट्री लिटिल परसिक्यूशन ओनली सीम्स टू डीपन क्रिश्चियन फर्वर। तो इससे ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन फर्वर खत्म होता है, जील खत्म होती है। वो यही कह रहा है कि आपने अगर किसी के ऊपर अत्याचार किया तो ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी फिर खत्म गायब हो जाएगी, दैट दे कम बैक वेरी स्ट्रांगली। तो उसी तरह से एक तरह से पैरेलल ड्रॉ किया है इसने, सिमिलर रीजनिंग, दैट एंटरटेनमेंट भी अगर आपने किसी के critically उसको evaluate को, doesn't mean that it will vanish, right? It's come back very very successfully. That's what he's trying to suggest. So this paragraph tells you that despite despite not so good reviews, these movies and shows are doing very very well. So that's it. This passage was about how Christian shows and movies are now taking center stage. They are getting good amount of success in terms of viewership. Profits are also pretty good because they don't need much money to make. The script or the material that is there is adapted from different biblical scripts, and it follows not just biblical stories but also Christian values. And they've received different kind of critical acclaims. However, the whatever bad reviews they've earned have not affected their commercial success. Let's go to the questions. Which of the following most accurately explains why Christian themed shows are attractive to producers in the current streaming landscape? They give hope to people in these dark times and have the backing of the US administration. See, this is about why these films are popular. Okay, why they are attractive to producers. Nahi hai. They give people, this is from the perspective of the viewers. This is not from the perspective of producers. They have the backing of the US administration. Obviously, US administration, JD Vance ki baat hui hai, aur baat hui hai Donald Trump ki, but it doesn't mean that this has got anything to do with being attractive to producer. Producers के लिए attractive इसलिए क्योंकि वो profits yield कर रहे हैं. So this is not the answer. Profitability stems primarily from a shared religious fervor in Hollywood. This is again profitability stems primarily from not this but from being relatively low, which is given in third option. Production cost is low while the potential audience base is global. Yes. This looks to be all right. They do not need expensive script writers so they can adapt stories from. See, expensive script writer की बात नहीं हुई है. They may not need script writers, but the passage does not talk about the script writers being expensive or not being expensive. The expensive ones are basically big name celebrities and special effects. So cost is in these. So this is not the answer. Correct answer is C. Which of the following, if true, would most weaken the idea that faith-based content is primarily motivated by restoring belief in things worth believing in? तो उसमें एक आइडिया दिया हुआ है कि फेथ बेस्ड कंटेंट इज प्राइमरली मोटिवेटेड बाय रिस्टोरिंग बिलीफ इन थिंग्स वर्थ बिलीविंग इन। ये जो केली बोल रही है यहाँ पे कि टुडे पीपल वांट टू वॉच थिंग्स टू रिस्टोर फेथ, राइट? तो स्टूडियो डिस्क्राइब्स मिशन नॉट एज मेकिंग क्रिश्चियनिटी बट रिस्टोरिंग फेथ इन थिंग्स वर्थ बिलीविंग इन। तो इसको वीकन कर रहा है आपको। दैट मीन्स कि दिस मे नॉट बी द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग दैट पीपल आर वॉचिंग दिस। मोस्ट राइटर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन आर ट्रेन्ड थियोलॉजियंस। तो इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इररिलेवेंट। Survey shows viewers are more attracted by familiar narratives than spiritual themes. So some might think that this is the answer. We will keep it. अभी इसको रख लेते हैं. Production studios consistently prioritize projects based on their potential return on investment. So faith-based content is primarily motivated by restoring belief in things worth believing. तो जो केली बोल रही है कि देखिए हम जो ये faith-based content बना रहे हैं, तो हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम रिस्टोर करना चाहते हैं फेथ इन थिंग्स वर्थ बिलीविंग इन। दैट मींस देयर मिशन और देयर पर्पस इज टू रिस्टोर फेथ इन थिंग्स वर्थ बिलीविंग इन। तो इसको वीकन करना है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड अ स्टेटमेंट दैट सेज नहीं नहीं आपको ये पर्पस नहीं है, आपका पर्पस कुछ और है, दिस इज नॉट द मोटिवेशन। तो ये आपको सी बता रहा है वेरी क्लियरली कि ये जो स्टूडियोज होते हैं ये पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते, वेदर इट इज एक्स थीम बेस्ड और वाई थीम बेस्ड। Okay, so faith-based content is not primarily motivated by restoring belief, but because it gives good money on their return on their investment. So this looks a better option. ये ठीक नहीं है वैसे भी, because this is talking about the viewers. Viewers are getting more attracted by familiar narratives. Now, familiar narratives, so even these belief things worth believing in, they are also familiar narratives. There is no differentiation between familiar or unfamiliar being made in the passage. It is not that these things worth believing in are not familiar to people. They are familiar to people. Okay, so this is not the answer.
C looks okay. Critics regularly pan such content for its lack of artistic merit and subtlety. Critics से हमें मतलब नहीं है, अगर जनता देख रही है पिक्चर और पैसे मिल रहे हैं स्टूडियो को, तो उसे क्रिटिक्स से क्या करना. So this is wrong. Correct answer is C. Which of the following best describes the rhetorical function of the reference to the Beards? तो Beards का जो है उन्होंने किया है, तो क्या था वो? There are many signs that Christian entertainment is having a movement, but the biggest one is the Beards which are everywhere. तो Beards हर जगह दिख रही है आपको. So it's like a humorous way in which he has mentioned this to highlight the authenticity of ancient biblical portraits. So authenticity बताने की नहीं देखिए, ये जो मूवीज और शो आ रहे हैं इसमें बेयर्ड दिखनी, दैट मीन दे आर वेरी ऑथेंटिक, ऐसा कहीं पे भी नहीं है. वी कैन नॉट इन्फर दिस. टू मॉक द लो प्रोडक्शन वैल्यूज, मॉकरी तो कहीं नहीं हो रही है इसमें. टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ ग्रूमिंग ट्रेंड्स हैव शिफ्टेड, नो नथिंग. ये पहले नहीं होता था बियर्ड, अब हो रहे हैं. To provide a vivid, almost humorous motif that signals the thematic repetitiveness. Yes. So this is like a vivid, which means a very, very lifelike, humorous motif. Motif means something that is a pattern. So this is a pattern that is repeating in different shows and movies. That is what he's trying to suggest here. So this looks fine. The passage implies that critics' harsh reviews of Christian entertainment often result in persecution of makers of these movies and shows. तो क्रिटिक्स अगर उसको हार्शली रिव्यू करते हैं तो उससे जो मेकर्स हैं उनको लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, दैट मीन दे आर टेकन टू टास्क. बिल्कुल नहीं. रेयरली अलाइन विद पॉपुलर व्यूअरशिप ट्रेंड्स. यस, वी कैन से दिस कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्श रिव्यू करो लेकिन जनता तो देख रही है, तो इट डज नॉट अलाइन विद पॉपुलर व्यूअरशिप ट्रेंड्स. उसको रख सकते हैं. टेंड टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट देयर कमर्शियल फेलियर, नो नॉट एट ऑल. बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं. Are generally based on secular bias and aesthetic ignorance with the irrelevant option. Correct answer is B, rarely aligned with popular viewership trends. Passage overall tone towards the rise of Christian entertainment can be described as reverent and celebratory. Reverent means बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार से देख रहे हैं, celebrity में celebrate कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. Author is trying to suggest that it is not because that suddenly faith has made a comeback. It is because of many things which are happening. ब्रॉडर सोशल क्लाइमेट ऐसा हो गया है और उसको उसमें पैसा दिख रहा है उन लोगों को, लोग थोड़े से होप को देखना चाह रहे हैं. तो इट इज नॉट सेलिब्रेटरी और एनीथिंग. डिटैच्ड एंड सिनिकल, क्लिनिकल भी नहीं है. डिटैच्ड मीन्स टोटली इंडिफरेंट. ह्यूमरस एंड subtly ironic. Yes, it is humorous and subtly ironic in the sense that he's saying the critics are not giving very good reviews and still it is doing well. लास्ट के उसमें बताया गया है. और दूसरा कि मूवीज में फील गुड फैक्टर बताया जाता है लेकिन वायलेंस भी होता है, बट दैट वायलेंस is muted to show that the evil is always vanquished. So humorous है and subtly ironic. This looks all right. Hostile तो बिल्कुल नहीं है, critical भी नहीं है. He is not saying that these are bad or these are not good or they should be banned. They are creating some negative side effects. ऐसा तो कहीं नहीं बताया उसको. See, we can mark. Each of the following can be inferred from the scripts or narrative styles they show the movies except. Some scripts aim to echo biblical language to lend authenticity and reverence. तो ये यहाँ पे बताया है कि some not all these films show offer biblical story. That means some do that. If some do that, we can surely infer. Not all, but some definitely do. Right? तो ये तो दिया हुआ है इसमें. Many shows selectively interpret religious text to cater to broader modern audiences. ये भी दिया हुआ है. We can infer that broader modern audiences को करते हैं ये. Right? So this we can infer from these two paragraphs surely. The dialogues in older biblical films are often praised for its literary richness and complexity. No, older biblical films का एक एग्जांपल दिया है, कुओ वाडिस. एंड कुओ वाडिस का जो डायलॉग्स है उसको वर्बल बोर्डम बताया उसमें. तो यहाँ से हम कह सकते हैं that this is not true. It is not praised for its literary richness and complexity. Rather, it was panned or it was criticized. This looks all right. Tone and theme of recent Christian entertainment often prioritize emotional uplift over theological rigor. तो ये भी यहाँ पे बताया हुआ है कि some merely serve up what are Christian values. So this can be inferred. So this is not the answer. C was the answer. What is the primary function of the fourth paragraph? However, some filmmakers argue it is less that Hollywood has seen the light in the context of the passage. So यहाँ पे ये fourth paragraph पढ़ लेते हैं. However, some filmmakers argue that it is less. तो हॉलीवुड को ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड को सडनली लाइट दिखने लगी, बट पीपल आर फीलिंग दैट द टाइम्स आर डार्क एंड पीपल आर फेल्ट स्ट्रेस्ड, और इसलिए ये चाहते हैं कि इनको ऐसी चीज दी जाए जो कि इनका फेथ रिस्टोर करे. ऐसा बोल रहा है फोर्थ पैराग्राफ. तो इट चैलेंजेस द आइडिया दैट क्रिश्चियन एंटरटेनमेंट इज राइजिंग सोनली ड्यू टू रिलीजियस रिसर्जेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रॉडर कल्चरल एक्सप्लेनेशन. दिस लुक्स फाइन. क्रिश्चियन एंटरटेनमेंट इज नॉट राइजिंग सोनली ड्यू टू अ रिलीजियस रिसर्जेंस. ये लिखा है जैसे यहाँ पे
It is not that, it is less that Hollywood has seen the light, that the world feels now very dark. People have felt afraid. तो लोग जो है वो अभी दुखी हैं. तो introducing a broader cultural explanation. This looks fine. We'll keep it. It propagates that in the present age there are far fewer things worth believing. ऐसा नहीं है. वो बोल रहा है हम जो भी things worth believing हैं उसको लेके आ रहे हैं. तो ऐसा नहीं. Prepares the background to defend the merit of faith-based shows against the critics' negative reviews discussed earlier. See, negative reviews were about the dialogues, about the films having no humor, very dull. तो उसको कैसे defend करने के लिए बात है. This is a totally irrelevant option. It introduces a contrasting genre of religious entertainment that emphasizes emotional realism over doctrine. Again, this is not true. Correct answer is A here. Doesn't make any sense. These two options are basically, you can easily eliminate these two options. What can be inferred from the last sentence of the passage in entertainment as in history, little persecution seems only to deepen Christian fervor. तो ये हमने जैसे डिस्कस किया था, persecution means जो अत्याचार करते हो आप, तो अगर आप किसी भी let's say you try to put someone down and then they come back. Okay, so तो जैसे जिसको कहते हैं कि so let's say people become stronger after they faced challenges and they faced resistance, they emerge stronger. तो उसी तरह से हिस्ट्री में जैसा हुआ है वैसा एंटरटेनमेंट में भी, that if the critics have been giving very bad reviews, then but the movies have been doing pretty good. Public criticism of Christian entertainment tends to weaken its popularity. ये उल्टा बोल रहा है. Christian theme content often thrives in spite of or even because of negative reception. Yes, many times negative reception होने के बाद भी वो या उसके कारण ही बहुत ज्यादा चल जाती है कोई चीज. ठीक. तो little persecution seems to deepen Christian fervor. This can match it. Success of religious shows depend primarily on critical acclaim and artistic excellence. ये तो बिल्कुल ही नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर तो ये तो totally opposite बोल रहा है. This is totally opposite. Modern researches of Christian entertainment presents a radical break from historical patterns. Nothing like this. Christian entertainment, he's saying, as in history. So there is no break from historical patterns. Correct answer is B. So I hope the passage and the questions are clear. That's it. Thank you.